Hello student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 8, Comparing Quantities. Open your textbook, page number 169. 8.6. Charge given on borrowed money or simple interest. Sohini said that they were going to buy a new scooter. Mohan asked her whether they had the money to buy it. Sohini said her father was going to take a loan from a bank. The money you borrow is known as sum borrowed or principal. This money would be used by the borrower for some time before it is returned. For keeping this money for some time, the borrowed has to pay some extra money to the bank. दिस इज़ नो एज इंटरेस्ट. जब हम अमाउंट लेते हैं बोरो मनी अबाउट बैंक से, तो उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं और उसको हम थोड़ी थोड़ी पे करते हैं एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक. दिस इज़ नो एज इंटरेस्ट. ओके, यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर by adding the sum borrowed and the interest. That is amount is equal to principal plus interest. You can find the amount you have to pay. आपने कितनी अमाउंट पे की the year by adding the sum borrowed the and the interest. That is amount is equal to principal और interest को ऐड कर दो तो वो आपको अमाउंट मिल जाएगी. Interest is generally given in percent for a period of 1 year. It is written as say 10% per year or per annum, or in short as 10% per annum. 10% per annum means on every 100 borrowed, rupees 10 is the interest you have to pay for 1 year. Let us take an example and see how this work. एग्जाम्पल 20 है, यहाँ पे देखो. अनीता टेक्स अ लोन ऑफ 5,000 रुपीज एट 15 पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर. तो 1 ईयर में उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी. द सम बोरोड 5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% पर ईयर. दिस मीन्स इफ 100 इज बोरोड सी हैज़ टू पे 15 एज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. अगर 100 है तो 15% 15 रुपीज़ हो जाए 1 ईयर में पे करना होगा. इफ सी हैज़ बोरोड 5,000 देन द इंटरेस्ट है सी हैज़ टू पे फॉर 1 ईयर. अगर 5,000 है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5,000. 2 0 कट हो जाएंगे. 15 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 750 उसे पे करने पड़ेंगे. सो एट द एंड ऑफ द ईयर सी हैज़ टू गिव एन अमाउंट ऑफ 5,000 प्लस 750 इज इक्वल टू 5,750. ये दोनों को ऐड करके ये बोरोड अमाउंट है और ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, तो टोटल कितनी हो गई 5,750. We can write a general relation to find interest for 1 year. Take P as the principal. प्रिंसिपल के लिए P लेना है और सम रेट R एज अ रेट परसेंटेज. रेट के लिए क्या लेना है R लेना है. नाउ ऑन एवरी 100 बोरोड द इंटरेस्ट पेड इज R. Therefore on P borrowed the interest paid for 1 year would be R multiply P upon 100 is equal to P multiply R upon 100. यहाँ पे देखो इंटरेस्ट फॉर मल्टीप्लाइज ईयर. इफ द amount is borrowed from more than 1 year, the interest is calculate for the period the money is kept for. For example, if Anita returns the money at the end of 2 years and the rate of interest is the same, then she would have to pay twice the interest. रुपीज़ 750 फॉर द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट के लिए हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है, वो हमने 750 है.
एंड 750 फॉर द सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर के लिए भी वही अमाउंट होगी। दिस वे फॉर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वेयर प्रिंसिपल इज नॉट चेंज, जो जब प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है तो उसकी अमाउंट भी मतलब इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होता। इंटरेस्ट वेयर प्रिंसिपल इज नॉट चेंज नो ए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होता। As the number of year increase, the interest also increase. As the number of year increase, the interest also increase. For 100 borrowed for 3 years at 18%, the interest to be paid at the end of 3 years, 18 plus 18 plus 18 is equal to 3 multiply 18. तो कितना हुआ? 18 3 जा 54. We can find the general form for simple interest for more than 1 year. We know that on a principal of rupee 8 r% rate of interest per year, the interest paid for 1 year is r multiply p upon 100. Therefore interest I paid for t मतलब क्या है? year है, time मतलब would be t मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पी, या ले सकते हो p मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, या ले सकते हो पी आर टी अपॉन 100. एंड अमाउंट you have to pay at the end of t years is a is equal to p plus I. ओके, सो यहाँ पे जो ट्राई दिस वाला है वो आपको ट्राई करना है. जस्ट एज इन द केस ऑफ prices related to items, if you are given any two of the three quantities in the relation I is equal to क्या होता है? p multiply t multiply r upon 100, you could find the remaining quantity. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है 21. इफ मनोहर pays an interest of rupees 750 for 2 years on a sum of प्रिंसिपल क्या है? 4500. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट का रेट फाइंड आउट करना है. आर हमारे पास नहीं है, हमारे पास देखो आई है, देन ईयर मतलब रेट 2 years, टाइम है 2 years का, और प्रिंसिपल है पी है. देखो यहाँ पे आई सॉल्यूशन 1 देखो, सॉल्यूशन 2 हम नहीं देखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन 1 है वो इजी है, इसलिए आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर अपॉन 100. तो हमारे पास आई है 750 इज इक्वल टू पी कितना है? 4500 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 years, 2 मल्टीप्लाई आर हमारे पास नहीं है अपॉन 100. यहाँ पे 0 0 कट कर दिया है, तो 750 अपॉन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है ये सामने डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 750 के नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू आर. अब यहाँ पे कट करके कितना आता है रेट? सभी को कट करके या डिवाइड करके कितना आता है? 8 1/3%, इतना रेट आ जाता है. सो ये जो है ये आपको याद रखना है कि I इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर अपॉन 100. ओके, सो यहाँ भी ट्राई दिस वाला है वो आपको ट्राई करना है. ओके बच्चों, ओके, थैंक यू.